Hindi speaking people. So आज हमारे बीच His Grace महात्मा प्रभु पधारे हैं. महात्मा प्रभु के बारे में मैं चंद लाइन बोलना चाहूँगा. इनका जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था 1950 साल में. 1969 साल में जब उनकी आयु सिर्फ 19 की थी, उन्होंने पहली बार प्रभुपाद के बुक भगवद गीता एज इट इज का उनको एक्सपीरियंस हुआ. उसके बाद 1970 में उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से वो मिले और उसके बाद उसी साल उन्हें पहली दीक्षा और दूसरी दीक्षा दोनों उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से ग्रहण की. महात्मा प्रभु जी ये इस्कॉन में काफी फेमस हैं अलग अलग विषयों में बात करने के लिए. खासकर हमारे गृहस्थ जीवन में जो भी हम जपा के बारे में हमें कठिनाइयां होती है या गृहस्थ जीवन में जो भी हम आपस की बातें होती है उसके बारे में वो काफी कुछ एक्सपर्ट हैं और हमेशा क्लास देते आ रहे हैं. सो हम सभी आज उत्सुक हैं उनसे सुनने के लिए. इससे पहले कि महात्मा प्रभु जी क्लास इससे शुरू करें तो हम पहले हिज ग्रेस चैतन्य अवतार प्रभु से निवेदन करेंगे कि वो आके प्रभु जी को गार्लैंड पहनाएं और हम बैकग्राउंड में हरे कृष्णा का जप 3 बार करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Gauranga Nityananda Om Jnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavari Paschachira Satarine Panchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare. Very happy to be here. बहुत खुशी हुई आप सब लोगों के बीच में आकर. Happy to see you all. आप सबको देखकर भी बहुत खुशी हुई है. You look very happy and enthusiastic. All your cell phone in silent mode, please. सब जो मोबाइल फोन को बंद कर दीजिएगा 1 घंटे के लिए. आप सब लोग बहुत ही खुश और बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण नजर आ रहे हैं. You're enthusiastic? क्या आप उत्साह में हैं? Will you be enthusiastic in 20 years? क्या आप इसी उत्साह के साथ 20 साल रहेंगे? I hope so, yes. मैं आशा करता हूँ. Is there a particular topic you want me to speak on? Was there anything planned? Or was I told and I didn't pay attention? No, Prabhu. We will be happy to hear from you. We have a lot of Grihasthas around and everybody is chanting also. So if you could touch on Japa and Grihastha life, whatever. We know you speak everything. Yes. Please. Yes. Basically building a community here. Building a community here. Oh, nice. 30-40 families here. Nice. I was just reading today a letter from Srila Prabhupada, and he said about we should show what ideal family life is like. So we have everyone in the family
a devotee, happy as devotees, following the principles. And Prabhupada wanted us to show by example. तो आज मैं श्रीला प्रभुपाद का एक पत्र जो है उसको पढ़ रहा था और उसमें प्रभुपाद ने बताया कि हमको उदाहरण के साथ ये बताना चाहिए सबको कि गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से जिया जाता है. The one thing that Srila Prabhupada wanted, एक जो चीज थी श्रीला प्रभुपाद हम सबसे चाहते थे and he mentioned many times, और उसका उन्होंने कई बार उसका उल्लेख किया, he wanted us to be happy और वो हम सबको खुश देखना चाहते थे and peaceful, और शांति से परिपूर्ण, because that's a foundation from which you can execute Krishna consciousness. और ये जो है कृष्ण भावनामृत की नींव है जहाँ से आप कृष्ण भावनामृत जो है उसको शुरू कर सकते हैं. So the goal of Grihastha life is to be Krishna conscious. तो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत होना, However you can do it. और किसी भी प्रकार से आप ये कर पाए, That's the goal. और यही लक्ष्य है. Sometimes we get in arguments. कई Yes? बार हम तर्क Yes. करते हैं. Right? Sometimes that happens. Even in India, that happens. क्या भारत में भी ये होता है कि तर्क करते हैं गृहस्थ जीवन में हम? Between the husband and wife. पति और पत्नी के बीच में तर्क होता है, Yeah. Or between other family members. और परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच में भी. Srila Prabhupada did not want us to take that seriously, those differences seriously. श्रील प्रभुपाद ये चाहते थे कि जो मतभेद है उनको हम ज्यादा गंभीरता से ना लें, पारिवारिक मतभेदों को. Because it doesn't matter who's right. तो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि कौन सही है. Can you remember an argument you had 3 years ago on this day with your husband? No, it's not important. It doesn't matter. तो आज से 3 साल पहले हो सकता है आपने अपने पति के साथ कुछ तर्क किया हो, क्या आपको याद है? ये मायने नहीं रखता. But at that moment you thought it was very important. लेकिन उस समय आपको ये लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है. Satyam hai? Very important. Very important. I have to be right. ये बहुत जरूरी है कि हम ये कहते हैं कि हम सही हैं, सही हैं. How many arguments can you remember? और आपने जो कितने तर्क दिए थे वो कितने याद हैं अभी आपको? Probably not many because they weren't important. वो हम सबको याद नहीं है क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है. But what's important? Who wins the argument? Is that important? तो महत्वपूर्ण क्या है? तर्क Some of the men were saying yes. कुछ जो पुरुष है वो ये कह रहे हैं हाँ सही है. That's the male ego, right? ये जो है जो आदमी का जो अहम है वो है ये. But that's not important. What's important is your Krishna consciousness. लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण है कृष्ण भावनामृत. Yes? सही है ना? So that's what Prabhupada wanted. और यही प्रभुपाद चाहते थे. He wanted us to live together peacefully प्रभुपाद यही चाहते हैं कि हम साथ में शांतिपूर्वक रहें and show the world how when you're Krishna conscious, you'll be happy and you'll be peaceful. और ये पूरे विश्व को बताएं कि जब आप कृष्ण भावनामृत में होते हैं तो किस प्रकार से आप शांतिपूर्वक जीवन जो है व्यतीत करते हैं. One time, in the early days of the movement, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रारंभिक समय में there was a fad. You know what a fad is? Fad? fad and fashion, right? A trend. And many devotees were in this trend. तो उस समय ये चलन था कई भक्तों के बीच में. And you know what the trend was? और आप जानते हैं वो चलन क्या था? Divorce. तलाक का. It had to become a fashion. और ये उस समय बहुत ज्यादा भक्तों के बीच में प्रचलित हो गया था. And of course Prabhupada was upset. और निश्चित रूप से प्रभुपाद जो है इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. But he was saying, what kind of example are we setting for the world?
if we don't have peaceful and happy marriages. तो प्रभुपाद यही कह रहे थे कि अगर हम शांतिपूर्वक ढंग से अगर नहीं रह सकते तो हम पूरे विश्व को क्या प्रदर्शित कर रहे हैं. If all the devotees are not getting along, or they're getting divorced, then people will think, well, I don't want to be a devotee because my family life is good now. I become a devotee, I'll end up like you, fighting and upset and divorce. अगर गृहस्थ जीवन में रहकर भक्त अगर इस प्रकार से तलाक लेंगे तो ये पूरे विश्व को जो है एक तरह से गलत संदेश जाएगा कि अगर कृष्ण भावना में रहकर जो भक्त हैं इस प्रकार से अगर तर्क करेंगे और साथ में नहीं रह सकते तो इससे अच्छा है कि हम भक्त ना बने और कृष्ण भावनामृत में ना जाएं. Now, something very interesting. अब ये बहुत ही एक रोचक तथ्य है यहाँ पे. Would you like to hear something very interesting? क्या आप सभी एक ये रोचक बात सुनना चाहेंगे? This is so interesting. बहुत ही ज्यादा रोचक है ये. Our philosophy says I'm a servant. हमारी जो दर्शन है वो ये कहता है कि हम सभी दास But हैं. somehow or other, after we get married, we get amnesia and we forget that philosophy. और किसी तरह से जब हम विवाहित हो जाते हैं तो हम ये बात को भूल जाते हैं कि हम जो हैं दास हैं. And we think, I'm an enjoyer. और फिर हमको ये लगता है कि हम जो हैं वो भोक्ता हैं. I'm Purusha. मैं पुरुष हूँ. Isn't that weird? क्या आपको ये अजीब सा नहीं लगता? I'm servant, that's for the temple. But at home, I'm God. Something like that. Yes? जब मैं मंदिर में होता हूँ तो मैं दास हूँ लेकिन घर में जब होता हूँ तो मैं भगवान हूँ. क्या ये नहीं होता? Isn't that weird? क्या ये अजीब नहीं है? Yeah. So that's a challenge और ये बहुत बड़ी चुनौती है of Grihastha life. गृहस्थ जीवन का. To be with the object of sense gratification, but to be detached and be in the mood of servant. तो इंद्र भोग की जो वस्तुएं हैं उनके साथ में रहकर भी उनसे अलग रहना ये एक प्रकार का चुनौती है. Yes? Yeah. So, क्या आप ऐसा सोचते हैं? सही है. and if you can do it, if you can do this, you know what Prabhupada said? अगर आप ये कर पाते हैं, क्या आप जानते हैं प्रभुपाद क्या कहते थे? He said the householders are as good as the sannyasis. तो वो कहते थे कि गृहस्थ जो हैं वो सन्यासी के समकक्ष हैं. And one time, और एक बार he said they're better than the sannyasis. और उन्होंने कहा कि गृहस्थ जो हैं वो सन्यासी से भी ज्यादा बेहतर हैं. You know why? आप जानते हैं क्या? Because sannyasi doesn't have a wife, सन्यासी जो है उनके पत्नी नहीं होती है. so nothing to renounce. तो कुछ भी उनको त्याग करने की आवश्यकता Doesn't नहीं have a है. home, nothing to renounce. उनका कोई घर नहीं होता और उनके पास कुछ त्याग करने के लिए भी नहीं होता. And Prabhupada said, if you're living with a wife and children and all the objects of sense gratification, and then you only use it for Krishna, you're actually more renounced than a sannyasi, because he doesn't have those things. तो अगर आप घर में परिवार और पत्नी और बच्चों के साथ में रहते हैं और इंद्रिय भोग की जितने भी वस्तुओं के साथ में रहते हैं और फिर भी अगर आप उनसे त्याग करके रह सकते हैं तो आप सन्यासियों से भी ज्यादा जो है उनका आपकी स्थिति है. Because many devotees in the early days wanted to take sannyas, and they were young men, newly married, and they wanted to take sannyas so they could be fully engaged. तो इस्कॉन यानी कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रारंभिक समय में कई जो भक्त थे जो नए भक्त आए थे और वो जवान थे और वो संन्यास लेना चाहते थे उस समय. And in those days, most of the Grihasthas were not working outside, but they were working full-time for the temple. और उस समय जो गृहस्थ थे वो पूरी तरह से मंदिर में रहकर सेवा किया करते थे और बाहर वो काम नहीं किया करते थे. And when those Grihasthas would ask Prabhupada, can I take sannyas? और जब ये गृहस्थ जो हैं श्रील प्रभुपाद से पूछते थे कि क्या हम संन्यास ले सकते हैं, He would say, you're already sannyas. You're giving everything to Krishna. तब श्रील प्रभुपाद कहते कि आप पहले से ही सन्यासी हैं क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए कर रहे हैं. Manasa deha geho yokinshu moho
Arpilantu apade mandakisho. You going to sing it? Manasa, Deha Geho. Mind, body, family, I give to you. That's Bhaktivinoda Thakur, I give to you. So that's Prabhupada's definition of sannyas for Grihastha. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस भजन में कहते हैं कि मेरा जो शरीर है और मेरा जो परिवार है वो पूर्ण रूप से आपको समर्पित है. In the beginning of the movement, much of the big preaching was done by Grihasthas. और कृष्ण भावनात्मक आंदोलन के प्रारंभिक समय में जितना भी ज्यादा प्रचार हुआ वो गृहस्थ जो भक्त थे उनके माध्यम से हुआ. In the beginning of the movement, most of the GBC were Grihastha. और आंदोलन के कृष्ण भावनात्मक आंदोलन के प्रारंभिक समय में जितने भी जीबीसी थे वो भी सब ज्यादातर गृहस्थ थे. Of course, there were only like 3 sannyasis, so they couldn't be in the majority. But still, Prabhupada wanted the sannyasis to travel and the Grihasthas to manage. और वहाँ पे उस समय 3 सन्यासी थे और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जो गृहस्थ हैं वो उसका नेतृत्व करें इस प्रकार से. And Prabhupada would say, in his spiritual master's movement, go to your mat. The Grihasthas never did those things. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनके समय में जो गृहस्थ थे वो इस प्रकार से प्रचार नहीं कर पाए थे. So Srila Bhaktisiddhanta sent sannyasis and brahmacharis to London to try to establish Krishna consciousness, and several years later they came back. They weren't successful. They established one little center, but not much happened. और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के समय में जब उन्होंने सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को पाश्चात्य देशों में भेजा तब वहाँ पे इतना प्रचार नहीं हो पाया. Then Prabhupada sent 3 Grihastha couples, and 6 months later the headlines in the what's the newspaper in, anybody know, in London? जब श्रील प्रभुपाद ने 3 गृहस्थ दंपतियों को प्रचार के लिए भेजा तो ये बहुत बड़ी समाचार न्यूज़ बन गया. Like the Telegraph, I think it was called. और लंदन के एक समाचार पत्र टेलीग्राफ में एक बहुत बड़ी समाचार के रूप में आया. And the headlines, Krishna startles London. Krishna startles, shakes up. तो उस समय ये आया कि कृष्ण ने जो है वहाँ पे पूरी तरह से एक तरह से भूकंप ला दिया है वहाँ पे. Because so much was happening. So many people were joining. Rath Yatra, the Beatles, and Prabhupada said, what my sannyasi godbrothers couldn't do, my Grihastha disciples were able to do. और उस समय वहाँ पे बहुत कुछ हुआ. लोग जो हैं वहाँ पे मंदिर में आ रहे थे, रथ यात्रा में आ रहे थे और कृष्ण भावनात्मक आंदोलन से जुड़ रहे थे. तब श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो मेरे सन्यासी गुरु भाई नहीं कर पाए वो आज ये सभी गृहस्थ भक्त कर पा रहे हैं. So he was very happy. और उस समय वो बहुत खुश थे. I can tell you my realization of what works, what makes Grihastha life work. और मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि गृहस्थ जीवन जो है वो किस प्रकार से काम करता है. Compromise, समझौता, tolerance, सहिष्णुता, at least a little bit of humility, और थोड़ी बहुत विनम्रता, empathy, थोड़ा बहुत सहयोग, kindness, और दयालुता, and flexibility. और थोड़ा बहुत उदारता. What did I just say? Can someone repeat what I just said? कोई बता सकता है अभी मैंने क्या क्या यहाँ पे बिंदु बताए हैं? What do you need? आपको क्या चाहिए? Can somebody say anything? Tolerance, compromise, kindness, flexibility, humility, tolerance, and empathy.
That's a good start. You can use more, but that's a good start. अगर आप ये बिंदु अगर समझ गए तो ये अच्छी शुरुआत है. You listed that in Hindi? तो अभी महाराज कह रहे हैं कि अभी जो हमने बिंदु बताए कि आप हिंदी में बता सकते हैं. अभी जो बताए थे सहिष्णुता, विनम्रता, दयालुता, उदारता, Karuna. दयालुता, Danya. Danya. Humility. ह्यूमिलिटी, विनम्रता. I don't know what empathy is. Is there a word for that? Empathy is a kind of cooperation. Udarta. It's not the right word. Empathy is not generosity. Now it's interesting. Those are all qualities of a devotee. और ये बहुत ही रोचक बात है कि ये सभी एक भक्त की जो है भक्त के गुण हैं ये सब. Okay, now I have a question. अब मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ. What if for the last week I was secretly shooting videos of you at home? तो अगर मैं पिछले सप्ताह आपका बहुत ही गुप्त तरीके से अगर वीडियो बना रहा होता आपके घर की जो आप गतिविधियां करते हैं उसका. Everything you were doing and all your interactions with your spouse. और जो कुछ भी आप कर रहे हैं और जो कुछ भी आप अपने जीवन साथी के साथ जो बातचीत कर रहे हैं अंतःक्रिया कर रहे हैं वो सभी अगर रिकॉर्ड करता तो क्या होता. And tonight we're going to show the videos. और आज वो वीडियो आप सबको यहाँ पे दिखाता. And we set up a big screen outside. और बाहर वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई. Would that be okay if we show the videos? क्या ये अच्छा होता अगर ये वीडियो वहाँ पे दिखाया जाता. Now, the answer is supposed to be yes, no problem, show it. और इसका उत्तर जो है वो यह होना चाहिए कि हाँ जरूर दिखाइए, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है. Because I'm not doing anything at home that is not Krishna conscious. क्योंकि हम घर पे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित ना हो. That's supposed to be the answer. और यही जो है उत्तर होना चाहिए था. But from what I can tell, most of you, if not all of you, would not want me to show that video. और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से शायद कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ये जो वीडियो है वो ऐसा बाहर दिखाया जाए सबको. True or true? सही है या सही है? So hopefully next year, when I ask you that question, you'll say yes. तो No आशा problem. करता हूँ कि अगले वर्ष जब मैं आपसे प्रश्न करूँगा तो आप इसका उत्तर Jai Gaur हाँ में Nitai. Jai Gaur Nitai. So, I wanted to expand, maybe we can expand upon this idea. इस विचार का हम और भी ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं. Krishna consciousness is a lifestyle. कृष्ण भावनामृत एक जीवन शैली है. It's not something you just do for a few hours a day. और ये ऐसा नहीं कि आप दिन के कुछ घंटों के लिए आप करते हैं कुछ. Oh, I did my puja, I did my japa. मैंने So- अपनी पूजा किया, मैंने अपना जप किया. Krishna consciousness is finished for today. तो कृष्ण भावनामृत आज के लिए समाप्त हो गया है. And I just act like an ordinary person. तो अब मैं एकदम एक साधारण इंसान के मनुष्य की तरह व्यवहार कर सकता हूँ. No humility, no tolerance, no kindness. Why? Just be like everybody else. कोई विनम्रता नहीं, कोई सहिष्णुता नहीं, कोई उदारता नहीं. एक साधारण मनुष्य की तरह क्यों किया जाए? तो एक साधारण मनुष्य की तरह जिएंगे हम. So when Krishna says, these are the qualities you should live by, तो कृष्ण ये कहते हैं he didn't put time limits on it. तो कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो गुण हैं उनके साथ हमको जीवन जीना चाहिए. Or, और इसके बारे में कोई समय की बद्धता नहीं है. or locations. और इसमें स्थान का भी कोई जो प्रतिबंध नहीं है. You should be humble और आपको विनम्र होना चाहिए. only when you're at the temple. और सिर्फ तब जब आप मंदिर में हो तब आपको सहिष्णु हो. When you go to work, no need to be humble. जब आप कार्य के लिए जाएं तब आपको विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है. With your husband or wife, no question of being humble. तो आपको अपने पति और पत्नी के साथ तो विनम्र होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है. You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ. And so a lot of problems in Grihastha life come from this.
तो जितने भी गृहस्थ जीवन की जो समस्याएं हैं वो इसी से ही उत्पन्न होती हैं। Yes, you're supposed to be humble हाँ, आपको अवश्य ही विनम्र होना चाहिए and kind and compassionate. और उदार और दयालु होना चाहिए। But that's for the other devotees, लेकिन ये तो दूसरे भक्तों के लिए है, not for you. ये हमारे लिए नहीं है। So, the people who are most, how do I say this? It's most difficult to be nice and tolerant and kind and compassionate, etc., with one's family. Much more difficult than doing that for the general public. और ये कहना बहुत ही कठिन है क्योंकि लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो भक्त हैं वो अपने परिवार और अपने पत्नी और बच्चों के प्रति उतने उदार सहिष्णु नहीं रह पाते जितना कि वो दूसरे जो बाहर के लोग हैं उनके लिए रहते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी बोलो। सत्यम है, मिथ्या है, सत्यम है। So that's a big challenge of Grihastha life. और ये गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, Isn't it? क्या ये नहीं है? Yes. So those qualities Krishna asks us to exhibit are meant to be exhibited at home, at work, at the temple, on the street, at the market, everywhere. और कृष्ण जो ये गुण हम हमारे द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं वो सब जगह हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके घर में, जब आप बाजार में हैं और मंदिर में हैं, सब जगह आपको वो गुण जो है प्रदर्शित करने चाहिए। What do you think? आप क्या सोचते हैं? It's difficult. बहुत ही It's कठिन a challenge. चुनौती है। But difficulty and challenge is good. अगर समस्या है, कठिन है और चुनौती है, ये ठीक है। You can be kind and humble and tolerant and peaceful and happy at home. You can do it. You can do it anywhere. अगर आप घर में शांतिपूर्वक हैं, खुश हैं, तो आप बाहर भी रह सकते हैं फिर। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, if someone criticizes you, अगर कोई आपकी निंदा करता है you should think तो आपको सोचना चाहिए that Krishna has sent this person to humble me. तो आपको ये सोचना चाहिए कि कृष्ण ने इस व्यक्ति को मुझे विनम्र बनाने के लिए भेजा है। Now, ladies, तो माताएं, men hate to be criticized. तो पुरुष हैं वो निंदा जो है उसको पसंद नहीं करते, But they especially hate to be criticized by women. लेकिन वो जो महिलाएं उनके द्वारा ही विशेष रूप से जो है उनका घृणा किया जाता है। And they especially hate to be criticized by their wives. और वो विशेष रूप से अपने पत्नी द्वारा जो है घृणा किया जाने से बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होता है। But somehow or other, लेकिन किसी भी तरह से it seems impossible ये देखा गया कि असंभव है for women to, from time to time, avoid criticizing. तो ये देखा गया है कि जो माता हैं उनके लिए निंदा करना एक तरह से असंभव हो जाता है। It's a fact of Grihastha life. It will happen, ये गृहस्थ जीवन का एक बहुत ही बड़ा तथ्य है। more or less. Yes? थोड़ा और ज्यादा No? नहीं। They're silent, that means they're agreeing. Yes. अगर आप चुप हैं इसका मतलब कि आप इससे सहमत हैं। So, men don't like it. तो For sure they don't like it. जो पुरुष हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते, But it happens. लेकिन ये होता है। So what's a man supposed to think? तो अब जो पुरुष हैं उनको क्या सोचना चाहिए? Krishna has sent me this woman to keep me humble. तो उनको पुरुष को ये सोचना चाहिए कि कृष्ण ने इस नारी को भेजा है ताकि मुझे विनम्र बनाया जा सके। You like that, men, or no? तो पुरुषों को ये पसंद आया या नहीं आया? They're thinking about it. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? They're not sure if they like it. मुझे पता है कि आपको ये पसंद नहीं आया होगा। As men, we don't like to be told we've done something wrong. और
एक पुरुष के नाते हमको ये पसंद नहीं आता कि हमको ये कहीं बताए कि हम गलत हैं। But a man who's cultivating humility will take it that this is the wife Krishna has sent me. So I guess he wants me to be a little humble. और जो पुरुष अपने अंदर विनम्रता का गुण जो है उसको पोषण कर रहे हैं, तो वो ये सोचेंगे कि कृष्ण ने ये जो स्त्री भेजी है वो मुझे विनम्र बनाने के लिए भेजी है। Ordinary men may not think like that. और जो साधारण पुरुष है वो इस तरह से नहीं सोचेंगे। But a devotee can think like that. लेकिन एक जो भक्त है वो इस तरह से सोच सकता है। Or a devotee can think, there's so many challenges in Grihastha life. तो भक्त ये सोच सकता है कि गृहस्थ जीवन में बहुत कई प्रकार की चुनौतियां हैं। And through these challenges, I can learn tolerance. और इन सभी चुनौतियों के द्वारा मैं विनम्रता को सीख सकता हूँ। So when things happen that are upsetting, I can think, Krishna is giving me an opportunity to learn how to be tolerant. और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो हमको ये सोचना चाहिए कि कृष्ण ने ये हमको बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु और विनम्र बनाने के लिए ये परिस्थितियां भेजी हैं। Or, what's the option? या फिर इसके और क्या विकल्प हैं? Intolerance. Yes? That's the option. तो असहिष्णु बन जाना, ये इसका फिर What's the option to tolerance? Intolerance. तो फिर Of course. सहिष्णुता का क्या विकल्प है? असहिष्णुता। So a devotee will think that all the challenges of Grihastha life are there to purify me. जो भक्त है वो ये सोचता है कि गृहस्थ जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं वो मुझे शुद्ध करने के लिए है। I was telling the men the other night, I said that some men, their Grihastha life is such a challenge. कल रात में एक भक्त को बता रहा था कि ये जो गृहस्थ जीवन है ये चुनौतियों से भरा हुआ है इस तरह से कि that in their next birth they become brahmacharis their whole life. तो अगले No problem. जीवन में वो पूर्ण रूप से पूरी जीवन वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। You see these brahmacharis and you think, why don't they get married? They have no desire to get married. तो जब आप किसी ब्रह्मचारी को देखते हैं तो आपको लगता है ये क्यों ना विवाह कर रहे हैं? Well, maybe in their last life they went through so many challenges and difficulties in the Grihastha ashram that that's still there in their subconscious. And in this life it's like, okay, I'm renounced. तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने पूर्व जन्म में गृहस्थ जीवन में उनको बहुत सारी चुनौतियां मिली, तो अब उनके जो अवचेतन में अभी भी ये बातें जो हैं वो हैं कि वो अच्छा है कि ब्रह्मचारी रहें। It's possible, right? Yes, possible. So Grihastha life with all its challenges is meant to purify us. और गृहस्थ जीवन में जितने भी चुनौतियां हैं वो हमको शुद्ध करने के लिए है। Because I can't speak for women, but I can speak for men. A man enters it thinking he's the enjoyer. मैं पुरुषों और नारियों के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन पुरुष जो है वो ये सोचता है कि मैं भोगता हूँ। When he's young and he's very optimistic about enjoying. और जब वो जवान होते हैं और बहुत ही आशावादी होते हैं तो उनको लगता है कि उनको उपभोग करना चाहिए। But after being married for 30, 40, 50 years, he realizes that the price of enjoyment is very high. और Yes? शादी करने के 40-50 साल बाद वो सोचते हैं कि ये जो इंद्रिय भोग का जो उनका सोचना था वो बहुत ज़्यादा महंगा साबित हुआ है। And that's how you get purified. और यही तरीका है जिससे कि आप जो है शुद्ध होते हैं। Because every man deep inside wants to enjoy women without paying a price. और Yes? जितने भी पुरुष हैं वो बहुत ही गहराई में जो है स्त्री का जो है उपभोग करना चाहते हैं बिना जो मूल्य चुकाए। But paying the price is how we become purified. लेकिन मूल्य देकर जो है हम इस प्रकार से शुद्ध हो सकते हैं। Take care of the wife, take care of the children, you have a job, you do that 30, 40 years. It's not easy. It's a lot of work. And it requires a lot of tolerance. और बच्चों की देखभाल करना, पत्नी की देखभाल करना और 30-40 साल तक कमाना, तो ये सब जो है आपको विनम्र करने वाले जो कार्य हैं एक प्रकार से।
This is how we become purified. और इस प्रकार से हम जो है शुद्ध होते हैं. And of course, there'll also be material happiness that comes from it as well. और ये भी है कि इससे थोड़ा बहुत भौतिक सुख भी आता है. But the goal of Grihastha life is not material happiness. लेकिन गृहस्थ जीवन का लक्ष्य जो है वो भौतिक जीवन की खुशी नहीं है. The goal is to become Krishna conscious and become happy as a result of being Krishna conscious. और गृहस्थ जीवन का उद्देश्य कि कृष्ण भावनामृत में होना और कृष्ण भावनामृत में खुश होना. You understand the difference? क्या आपको ये अंतर समझ में आया? You either try to be happy by being together, or you try to be Krishna conscious by being together and get happiness as a consequence of your Krishna consciousness. और आप कृष्ण भावनामृत में रहकर जो है सुख प्राप्त करते हैं या फिर साथ में रहकर सुख प्राप्त करते हैं. क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जब आप रहते हैं तो सुख जो है वो आपको अपने आप मिल जाता है. Now, I will explain to you an observation that I've had over the many years I've been a devotee. और अब मैं आपको काफ़ी समय जब मैं भक्त रहा हूँ तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि मैंने जो बातें देखी हैं वो आपके साथ अब साझा करूंगा. It's not statistical research, it's an observation. और ये कोई But- सांख्यिकी और कोई अनुसंधान नहीं है, लेकिन ये मेरा एक प्रकार से अवलोकन है. But generally, सामान्य रूप से those who have good and stable marriages have good and stable Krishna consciousness. और जिनका अच्छा और स्थायी गृहस्थ जीवन होता है तो उनका अच्छा और स्थायी कृष्ण भावनामय जीवन भी होता है. Those who are raised in good and stable families generally become good devotees when they're और older. जो अच्छे स्थायी परिवारों में जन्म लेते हैं वो आगे जाकर भी अच्छे भक्त भी बनते हैं. So it's very important ashram. और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है. If we don't do this ashram right, it will have a negative effect on our Krishna consciousness. अगर हम इस आश्रम में रहकर सही प्रकार से व्यवहार नहीं करते तो हमारे कृष्ण भावनामृत के लिए बहुत ही गलत हो जाता है. So we shouldn't think that it's not important to have a good marriage. तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि Right. अच्छा जो है वैवाहिक जीवन हो. You shouldn't. No, the important thing is to be Krishna conscious. It doesn't matter how my marriage goes, but it generally, if you don't have a good marriage, if you have a disturbed relationship at home, it affects your Krishna consciousness. तो सामान्य रूप से ये है कि कृष्ण भावनामृत जीवन जो है उससे आपका गृहस्थ जीवन जो है प्रभावित होता है. तो जरूरी नहीं है कि आपका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं हो तो कृष्ण भावनामृत अच्छी हो, लेकिन अगर आपका कृष्ण भावनामृत जीवन अच्छा होगा तो गृहस्थ जीवन विशेष रूप से अच्छा होगा. At least that's what I've seen. और इतना मैंने देखा है अपने जीवन में. So I'll let you ask some questions. तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. Because, yeah, my experience with marriage is not with Indians so much. So I don't know if what I'm saying is relating to you or not, or if you think about these things. So maybe you ask some questions. तो मैंने जो भी कहा, मेरा जो अनुभव है वो भारतीय जो है विवाह है उनके बारे में नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई और भी प्रश्न हैं इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो महाराज बता रहे हैं उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है. Yes. Hare Krishna. You mentioned about those qualities. It's easy for Grihastha devotee to exhibit outside, Yes. but difficult in the family. Yes. Question, bro, is why is it so, and how we can make it more inward, positive, and in the way we show outside positive. तो प्रभु जी ने यहाँ पे प्रश्न किया कि महाराज ने एक बिंदु बताया था कि जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त होते हैं वो मंदिर में अच्छे से इनका जो है इतना गुणों का या घर में अपने गुण इतने ये कृष्ण भावनामृत के गुणों का प्रदर्शन नहीं कर पाते जितना बाहर कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों है, ऐसा कि वो बाहर जो है गुणों का प्रदर्शन कर पाते हैं लेकिन घर में जो है वो नहीं कर पाते? There could be many reasons. और तो उससे बाहर कैसे जाया जाए और इसका क्या उपाय है? He was at, for those who are listening, he was asking why it's more difficult
to be kind and compassionate and understanding and so forth, more difficult within can be at times more difficult within the family than for people in general. And I was saying there can be many reasons. तो मैं ये कहता हूँ कि इसके कई कारण हैं. I think one possible reason, संभवतः इसका एक कारण यह है कि if you're a devoted husband and you have a devoted wife, अगर आप एक समर्पित जो है पति हैं और एक समर्पित पत्नी हैं, there can be a tendency to think, it doesn't matter how I treat her or him, he or she is not going to leave me. तो आपके अंदर ये इस प्रकार की प्रवृत्ति आ सकती है कि चाहे मैं कुछ भी किसी तरह से व्यवहार करूं, ये मुझे छोड़ने वाला या छोड़ने वाली नहीं है. So, if you don't treat your boss well, you may lose your job, right? तो आप जानते हैं कि अगर आप अपने बॉस के साथ ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको अपना जॉब जो है वो छोड़ना पड़ सकता है. If you mistreat someone in a shop, they may kick you out. अगर आप दुकान में किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो आपको दुकान से निकाल दिया जाएगा. They're thinking, oh, my wife's very devoted or my husband's very devoted, so I don't think it's a conscious thought, I think it's subconscious. तो आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा पति जो है वो समर्पित है, मेरी पत्नी समर्पित है, तो मैं कहूँगा कि ये जो विचार है ये अवचेतन में है. आप ऐसा नहीं सोचते कि आप उनके साथ गलत व्यवहार करना चाहते हैं. Or let's say your wife is very respectful and you haven't earned the respect, she's just respectful. So then you don't feel obliged to be respectful to her because it doesn't matter, she'll always be nice to you. So, we say women should have all these good qualities, but if in some senses it can be difficult for the men because they could take advantage of it. तो कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नी है वो पति का सम्मान करती हैं और पति के अंदर भी ये भावना होती है कि वो सम्मान प्राप्त करे, लेकिन यहाँ पे जो ये स्त्रियों का जो ये भाव है सम्मान देने का, ये पुरुषों में जो सामान्य रूप से नहीं देखा जाता कि वो ये उनके साथ वापस उसी तरह का व्यवहार करें. She's supposed to be submissive, etc., etc. और ये वो सोचते हैं कि जो पत्नी है उसको जो है समर्पित होना चाहिए. In a misunderstanding would be that I could act any way I want and demand that from her. और ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं उसके साथ किसी भी तरह से व्यवहार कर सकता हूँ और मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगा. I just heard something very interesting. और मैंने एक बहुत ही रोचक जो चीज़ है वो पढ़ी. I don't know who said this. It was one of our spiritual masters. मुझे नहीं पता है किसने कहा, लेकिन हमारे किसी आध्यात्मिक गुरु ने कहा ये. He said, when I talk about the qualities of a wife, I will never talk about it in front of men. तो उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं जो पत्नी है या स्त्री है उनके गुणों के बारे में बताऊंगा तो मैं ये पुरुषों के सामने ये जो है उनके गुण नहीं बताऊंगा. Because then men will fault their wives if their wives don't follow that Sri Dharma the way it says in Shastra. They'll expect it, and they'll not expect it, they'll demand it as well. तो पुरुष जो हैं वो इसका अनुचित लाभ उठाएंगे और ये जो गुण है उनको वो अपने पत्नी में स्त्री धर्म के उसके साथ जोड़कर देखेंगे कि उनको ये गुण जो है प्रदर्शित करने ही चाहिए. Because if you understand the Shastra properly, when it's talking about the qualities of women, it's addressing that to women, not to men. When it's talking about the qualities of a man, it's addressing it to men, not to women. So women could do the same thing. Oh, Shastra says you're supposed to be like this. Why aren't you like that? I'm not going to serve you unless you're like this. Right? So, but those qualities are for you. Female qualities are for them. And then we run into problems when we demand those qualities of our spouses rather than demand those of ourselves. शास्त्रों में ये बताते हैं कि पत्नी को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, स्त्री धर्म क्या है, और उसमें ये भी बताते हैं कि पुरुष धर्म क्या है, पुरुष को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए. तो स्त्रियां जो हैं वो इस बात की मांग कर सकती हैं कि पुरुषों को इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार से लिखा गया है. तो
ये इस प्रकार से कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ पे स्त्री और पुरुष इस प्रकार से शास्त्रों का उल्लेख देकर जो है एक प्रकार से दूसरों से जो एक गुण है उनकी अपेक्षा या मांग करते हैं. So my wife's a marriage counselor. तो मेरी जो पत्नी है वो विवाह के जो बारे में जो काउंसलर है वो. And she was counseling a couple. And the wife said they had a good marriage until they attended a lecture in which the teacher described the qualities of the woman. And ever since that point, he demanded it of his wife, and the marriage just had trouble and went down. And they're ready to get divorced now because it's so hard for her because he doesn't chant his rounds, he doesn't do Krishna consciousness very much, and he's demanding her to be the perfect wife. And she said that's when the relationship started to become destroyed. महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि महाराज की जो पत्नी हैं वो विवाह के बारे में जो सलाह देती हैं, सलाहकार हैं, और उनसे एक जो भक्त हैं वो मिलने आई और उन्होंने अपने विवाह के बारे में महाराज से सलाह किया. तो उन्होंने कहा कि हमारे वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तक कि जब तक एक प्रवचन में एक जो प्रवचक थे उन्होंने ये बोला कि स्त्री के जो धर्म है क्या है और स्त्री गुण क्या है, और उसके पश्चात तो ये जो मेरे पति हैं वो ये इन गुणों की अपेक्षा मुझसे करने लग गए और तब से हमारे वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो गई. So rather than demand your spouse to be perfect, demand yourself to follow what the Shastra says you should do. तो अपने जो पति या पत्नी से अपेक्षा रखने की बजाय यह महत्वपूर्ण है कि हम उस बात की अनुपालना करें जो शास्त्रों में हमारे लिए बताई गई है. Mind your own business, more or less. तो आप अपने व्यवसाय का ध्यान रखें किसी की. So those two things, this confession by this one woman as to why their marriage went into trouble, and then that statement another devotee told me that their guru will never talk about female qualities in the presence of men. I heard that both within like 3 days, and it made so much sense to me. और ये तो दोनों बातें कि जो स्त्री धर्म हैं इनके इनका जो प्रवचन करने वाले उन्होंने ये कहा कि ये जो बात है पुरुषों के सामने नहीं कहनी चाहिए, और ये जो सलाह वाली जो बात थी ये दोनों एक साथ 3 दिन के अंतराल में मेरे को ये एक साथ सुनने को मिली. When you first meet a man or a woman, you're very nice to them. जब आप पहली बार स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं. If you're interested in marriage, you'll be very nice. और अगर आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो आप अवश्य एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं. But once they agree to marry you, you may not be so nice anymore because you've got what you wanted. Yes? तो जब वो आपके साथ विवाह के लिए राजी हो जाते हैं तब आप उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते क्योंकि अब आपको वो मिल गया जिसकी आप इच्छा रखते थे. Yes? हाँ? No? Maybe? नहीं, शायद. For some people, yes. लेकिन कुछ लोगों के लिए हाँ है. And of course, that saying, what is it? That familiarity breeds contempt. So that's natural psychology. We take for granted people we're closest to. और जैसा कि मनोविज्ञान में बताया गया है कि जब आप किसी के ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो आप उसका अपमान करने लग जाते हैं, और ये कुछ हद तक सही भी है. But I personally take it as a challenge. लेकिन मैं इसको व्यक्तिगत रूप से एक चुनौती के रूप में लेता हूँ. That I feel that I'm a hypocrite if I tell people to be kind and humble and compassionate and I don't do it at home. I feel like a hypocrite. मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक तरह से दोगला हूँ कि मैं सहिष्णुता और विनम्रता की बात करता हूँ दूसरों के सामने, लेकिन घर पे जब आता हूँ तो मैं इन व्यवहारों का प्रदर्शन नहीं करता. I give a powerful lecture on humility. तो मैं विनम्रता के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त शक्तिशाली जो है प्रवचन देता हूँ. And then I go home and I act in the opposite way. और जब मैं घर जाता हूँ तो पूरा विपरीत रूप से जो है घर में व्यवहार करता हूँ. So we want to avoid that. And we want to be aware of it and we want to avoid it.
तो हमको अवश्य ऐसी चीज़ों का जो है अनुपालना नहीं करनी चाहिए. Is that okay? Something. We could say more, but that's just a start. Can be many reasons. तो इसके कई कारण हैं. उनमें से एक ये कारण भी है. You know, it could be other reasons that you think that a woman should be seen and not heard, and shouldn't have any role other than just to be a menial servant. And if she's not, you get upset. So that could, you know, it could be so many reasons. बहुत सारे इसके कारण हैं. कारण ये भी हो सकता है कि आप ये सोचते हैं कि वो आपकी एक दासी बन के ही रहे और कुछ ना करे. तो ये भी एक तरह से कारण है इसका. Which is really a problem if she's not of that disposition. It's not. If she is of that disposition, it may not be a problem, but if she's not, that would be a problem for sure. तो अगर जो पत्नी अगर उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, मानसिक स्थिति की वो इस प्रकार से सोच रही है, तब ये समस्या हो सकती है. अगर वो सोच रही है तो ठीक है, फिर समस्या नहीं होगी. The problem, as I see it, is that we're trying to instill a culture that requires that people be trained from the very beginning in that culture to be able to properly adapt to it. And it's very difficult to fully adapt to it if you weren't trained from the beginning. और ये संस्कृति है एक प्रकार से जिसमें शुरू से ही जो है इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे कि इन गुणों का जो है शुरू से इनको जो है अंतर्सात कर दिया जाए. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता. Like a man may want a very gentle, quiet, humble and submissive wife. And then he marries a woman who has 3 PhDs and is CEO of some big company. That's not the woman to marry if you want a very quiet, gentle, homemaking wife. So, किसी को अगर शांत और एक गृहिणी के जैसी घर का काम करने वाली अगर उसको पत्नी चाहिए और वो एक 3 बार किसी ने PhD कर रखी है और कोई बहुत बड़ी कंपनी की CEO है, तो इस प्रकार की जो स्त्री है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है. So we have to deal with the reality. तो इस प्रकार से हमको वास्तविकता से अवश्य ही परिचय होना चाहिए. And I think sometimes we're not realistic. और ऐसा कई बार होता है कि हम जो है वास्तविकता से जो है we may be demanding things that each spouse is incapable of perfectly doing. और हम इस प्रकार की कई बार अपने पति या पत्नी से मांग रखते हैं There's जो a- शायद उसको नहीं पूरा कर This सकते. is an amazing story. This devotee writes Prabhupada and he says, Srila Prabhupada, my wife is more Krishna conscious than I am. और And I'm the man and I'm supposed to be the spiritual master. और यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत एक घटना है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद को उनके एक शिष्य लिखते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो मुझसे कहीं ज्यादा जो है कृष्ण भावना. So Prabhupada said something quite revolutionary. Well, if she's more advanced, then you follow her. तो ये तो बहुत ही क्रांतिकारी है. अगर वो ऐसा ही है तो आपको उनकी अनुपालना करनी चाहिए. Which from a philosophical point of view makes sense. तो Doesn't दर्शन it? के हिसाब से ये जो है वो बात जो है तथ्यपूर्वक लगती है. From a traditional cultural view, it doesn't make sense. लेकिन सांस्कृतिक जो है उसके रूप से अगर इसको देखा जाए तो ये बात उतना हमको जचती नहीं है. So, the wife had second initiation, the husband didn't. And when the husband got second initiation, Prabhupada told her to give him the thread and give him the mantra. और जो That's kind of backwards, right? तो जब पत्नी है उनको ब्राह्मण दीक्षा मिल गया, दूसरा दीक्षा मिल गया, लेकिन पत्नी को मिल गया, लेकिन उसके बाद में जब पति को मिलता है तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि आप अब उनको जो है ये ब्राह्मण दीक्षा का जो है So Prabhupada just dealt, अजीब सा लगता है ये. Prabhupada just dealt with the reality. That was the reality of that situation. She was second initiated, he wasn't, and Prabhupada wasn't there to give the mantra, so he told her to give it to him. तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो यहाँ पे स्थिति बनती है जहाँ पे जो पति है वो उनको अभी तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिली लेकिन पत्नी ब्राह्मण दीक्षित है. That's called, प्रभुपाद चूंकि वहाँ पे उपस्थित नहीं थे तो उन्होंने पत्नी को बोला कि आप जो है उनको मंत्र दीक्षा दीजिए. that's called flexible. इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल होना. Yes?
flexible when needed. Not, if you don't need it, that's a different thing, but in that situation it was needed. ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये एक तरह से स्थिति के ऊपर निर्भर करती है. जब इसकी जरूरत हो तब अवश्य हमको होना चाहिए. So, maybe you're not flexible and it creates a problem. So you stick to a principle, but you create a problem by sticking to a principle. So Prabhupada wouldn't do that. If he had to be flexible to get a result, a Krishna conscious result, then he would make some adjustment if necessary. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो है वो एक नियम जो है उससे एकदम बंधे नहीं रहे, जबकि स्थिति के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया कि किस प्रकार से जो है उस स्थिति के लिए सही है वो किस प्रकार से किया जाए, और कृष्ण भावनामृत के लिए जो सही है वो किस प्रकार से किया जाए, ना कि एक नियम से जुड़कर जो है उसको कृष्ण भावनामृत में वो बाधा बने. You can meditate on that. आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं. So why don't we end? You look like you want to do something else now. Like what, kirtan or prasadam or something else? What's next? तो अगला कार्यक्रम क्या है? In case there are questions, we can ask any further questions. All right, anyone have more? Any further questions? क्या किसी का कोई प्रश्न है तो वो महाराज से पूछ सकते हैं. We didn't talk about japa, but we don't have to because I have this book here. हमने जप के बारे में कोई बात नहीं किया. If you're interested in this book, this is called Japa Affirmations, and this will help you tremendously with your japa. तो महाराज ने ये एक किताब लिखी है जपा एफर्मेशन, जो आपको आपके जप में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी. तो आप चाहें तो इस किताब को ले There's 20 affirmations to meditate on when you chant japa. तो जब आप जप कर रहे हैं तो उससे पहले आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको जप में जो है सहायता मिल सकती है इस किताब के माध्यम से. This will do you more good than any lecture I could give you. तो ये जो है किताब आपकी, मैं कितने प्रवचन दूं उससे कहीं ज़्यादा ही आपकी सहायता करेगी. So if you're interested, Sureshwar is sitting in the back, तो अगर आप and he'll be able to get. अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप सुरेश्वर प्रभु जी जो You can get the book from him. तो उनसे आप ये पुस्तक जो है प्राप्त कर सकते हैं. Only in English, unless someone wants to translate it into Hindi. ये सिर्फ I'll be happy if you translate it. And, yeah, you can print it in Hindi or Kannada or any language you like. Yeah. Anything else? You have a question? I just have one question. Some of the qualities which you mentioned, they are very, very relevant and very apt also. My only question is, when we are in the spiritual, we are having those qualities, trying to imbibe those qualities within ourselves in a spiritual level, but we play dual levels of being in the material world also. Yes. So you always come across the other side when they may not respect the mood in which you're coming or you're reaching out to them. Yes. So it kind of creates some sort of a irony within you, a confused state of mind, where you're trying to be somebody, but the other side pursues you to be somebody else, either a little submissive or somebody who's incapable. So how do you manage this dual participation? Very good question. You understand the question? Yeah, understood. But to translate it as is will be difficult, but I will try. How do you? Well, it's kind of like you're saying. Well, aren't you saying? तो मेरा एक प्रश्न है कि प्रभु जी ने जो बताया कि आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए आपके अंदर भौतिक जीवन में, वो उन गुणों के कारण आपका जो भौतिक जीवन है वो आगे बढ़ सकता है. लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि हम निजी जीवन में एक आध्यात्मिक जीवन में भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व होता है और भौतिक जीवन में भी हमारा उत्तरदायित्व होता है. तो हम ये सब गुण रखकर हम आध्यात्मिक जीवन में लोगों से मिलेंगे तो उनका रवैया अलग होता है आपको देखने का. वो सोचते हैं कि आप कोई अलग ही चीज हो, अलग ही लोग हैं. तो ये जो विडंबना है इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं कि कौन से लोगों से कैसे बात करना चाहिए, कब कैसे बात करना चाहिए, यही मेरा प्रश्न है. Can you give an example? That would help me.
Yeah, I can relate to corporate life sometimes. When we are taught in the in the spirituality that you need to be submissive and you need to, of course, I never raise my voice, but sometimes they say that you need to be in a mood that even if somebody is doing a service, he is doing a service. So even if he is faulted on something, you need to step into his shoes and try to do his bit of it. You need to be humble to that extent. But in a material world, you have a very, very clearly laid out hierarchy. So if somebody is not performing, you escalate the matter to his boss once, twice. Beyond that, you ask him to be leaving the job. So that's the way it is. So the mood which you carry after a morning in the temple, when you get into your office shoes, so are you supposed to then wear a different hat, or how do you do that? Yeah. It requires a broader definition. If you're using the example of humility, we could start with that. It would require a broader definition. Because the material understanding of humility tends to make people think, if I'm humble, I'll be walked over and powerless and weak. तो जो विनम्रता की जो भौतिक परिभाषा है उसमें ये लगता है कि अगर मैं विनम्र हो गया तो लोग मुझे कुचल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे. Now if we look at Arjuna, अगर आप अर्जुन को it देखें seemed like he was being humble when he declined to fight. तो ऐसा लगता है कि जब उसने युद्ध करने से मना कर दिया तो वो थोड़ा विनम्रता का प्रदर्शन कर रहा था. But actually he wasn't. लेकिन वास्तव में वो नहीं कर रहा था ऐसा. Because क्योंकि he was declining to follow Krishna's instruction. क्योंकि वो कृष्ण के जो निर्देश हैं उनके अनुपालना से मना कर रहा था. So when he was killing, लेकिन जब वो मार रहा था he was being humble. तो वो विनम्र था. And when he was renouncing, और जब वो त्याग कर रहा था he wasn't. He was being proud because he wasn't following Krishna's instruction. तो वो उनको थोड़ा घमंड था कि वो कृष्ण के जो है निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से. So one definition of humility, therefore, is following what Krishna wants. विनम्रता की एक परिभाषा ये भी कि कृष्ण जो कर रहे हैं हम उसकी अनुपालना करें. So you don't want to lose your Krishna consciousness. तो आप कृष्ण You don't want to भावनामृत को compromise your Krishna consciousness. तो आप कृष्ण That's भावनामृत for को- sure. कृष्ण भावनामृत के साथ आप कोई समझौता नहीं करेंगे. And you always want to be respectful because that's an aspect of humility. लेकिन आप हमेशा सम्मानपूर्वक You can- व्यवहार करेंगे. You can respectfully, compassionately, regrettingly fire somebody. तो आप सम्मानपूर्वक और प्रायश्चित करते हुए आप किसी को आप नौकरी से निकाल सकते हैं इस प्रकार से. At the same time, लेकिन उसी समय I would say, मैं ये कहूँगा when you're employed by a company, जब आप किसी कंपनी में काम करते then हैं you need to go to the Bhagavatam. और आपको भागवतम में And जाना I है. don't say this in a derogatory way, but you need to go to the Bhagavatam and look at the qualities of the Shudra, because that's what you're doing. And one of the qualities of the Shudra is dedication to the boss or the master. So then you're obligated to fire that person out of dedication, because because you're employed by that company, so you're obligated to do it. But you don't have to become proud when you do it. You can maintain that Krishna consciousness within you, the right mentality, at the same time duty-bound to serve that company. I think the problem is when we give up the Krishna consciousness, we think we have to give up the Krishna consciousness to do something which doesn't seem humble. That's when we get into trouble. तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि अगर किसी को नौकरी से निकालना हो तो हमारा व्यवहार किस प्रकार से रहना चाहिए. तो यहाँ पे महाराज कहते हैं कि अगर आप भागवतम कक्षा में जा रहे हैं और आपको ये लगता, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उसके कर्मचारी हैं और आप शूद्र की तरह हैं वहाँ पे, और आपको जो कहा गया है अगर आप वो करते हैं उस प्रकार से और उसमें विनम्रता के साथ करते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, क्योंकि शूद्र का एक गुण है कि वो अपने मालिक का जो निर्देश होते हैं उसका पालना करता है और जो मालिक होता है उसके अच्छे के लिए वो कार्य करता है. तो यहाँ पे जब वो किसी कर्मचारी को निकाल रहा है तो वो सिर्फ उसके निर्देश की पालना कर रहा है, न कि घमंड के साथ कि मैं उसको जो है नौकरी से निकाल रहा हूँ, इस प्रकार से नहीं. So we should never think we have to give up the qualities of a devotee to be effective. We just have to maybe recontextualize
how it's applied in that environment, which is a good exercise, because it's easy to apply it in the temple, but it's more difficult to apply it in family, it's more difficult in the corporate world. And even on book distribution, people are nasty, and you have to apply humility there, not speak back to them when they speak back to you. So I think these are all really important for us to learn. महाराज यहाँ पे बताते हैं कि ये जो विनम्रता का गुण है, ये हम बाहर जब प्रदर्शित करते हैं और जब हमारे कार्य क्षेत्र में प्रदर्शित करते हैं ये गुण को, तो इसको हमको स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए. और अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं और हम पुस्तक वितरण भी करते हैं, तो उस समय भी हमको ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कि हमको सही प्रकार से हमारा जो प्रतिक्रिया नहीं देते, तो भी हम उसको जो है कृष्ण भावनामृत में जो जरूरी है वो करते हुए उसके साथ व्यवहार करते हैं, ताकि हम कृष्ण भावनामृत में भटके नहीं. You know, one of your suppliers is trying to cheat you. So you can't just be, whatever you say, it's all Krishna's mercy. No, you're responsible and the company's losing money, so you have to अगर आपका कोई सप्लाई जैसे महाराज do what you have to do. So now maybe be a little, तो आप हाथ जोड़ के उससे ऐसा नहीं कह सकते कि अरे नहीं. now you have to be a bit of a chatriya. Right? और इस प्रकार से क्योंकि आप ऐसा उस प्रकार उस समय व्यवहार नहीं कर सकते. It's like, आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो आप कंपनी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं. it's like sometimes we saw how angry Prabhupada would get with Mayavadis. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जो है कई बार मायावादियों के साथ बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते थे. But we never thought he wasn't being humble. तो कभी वो ये नहीं सोचे कि मैं विनम्र हूँ या नहीं हूँ. We never got that impression. But it looked like it. It didn't look like humility. तो लेकिन ये हमको ये लगता है कि उस वक्त में प्रभुपाद जो है विनम्र नहीं थे. And then one time Prabhupada said, एक बार श्री प्रभुपाद ने कहा, if somebody attacks you, you don't do anything. But if someone attacks another devotee, no more trinadapi, you protect him. तो अगर श्री प्रभुपाद Those were his words. Those were his exact words. No more trinadapi. You protect that devotee. तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई आपके ऊपर प्रहार करता है, आपके ऊपर वार करता है, तो आप उसको विनम्रता के साथ सहन करेंगे. In other words, don't tolerate that. Yourself you tolerate, but for another devotee you don't tolerate. So there is a sense that tolerance and humility could actually be tamaguna. Right? लेकिन अगर कोई दूसरे भक्त के ऊपर कोई वार करता है और उसको अगर कोई चोट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो हमको तुरंत उसका प्रतिकार करना चाहिए. So I think that's the one of the most important things for us is the practical integration of Krishna consciousness in every situation. That's the challenge also. हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम कृष्ण भावनामृत में जो गुण हैं इनको प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में जो है उसको लागू करें. यही सबसे बड़ी चुनौती है. Yes? That's the challenge. तो ये सबसे बड़ी It's like it's easy to be a brahmachari. तो ब्रह्मचारी बनना बहुत There's not a lot of integration required. तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है इंटीग्रेशन. So, they make a lot of advancement very quickly. They're in an ideal environment. क्योंकि वो एक आदर्श वातावरण में रहते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं. But the advantage of being Grihastha is you have to learn integration. लेकिन गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम सबको साथ में लेकर चलें. And I can say honestly, I think I'm stronger for being in situations which were so not Krishna conscious, and I had to figure out how to be Krishna conscious in that. And as a brahmachari, that never happened. I was always in Krishna conscious situations. I never had to make any adjustment. So I think I've gotten certain strength from having to make those adjustments. इस प्रकार से जो ब्रह्मचारी उनके लिए आसान होता है क्योंकि उनके सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं आती जब वो कृष्ण भावनामृत में नहीं हो. लेकिन एक गृहस्थ के सामने ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो कई बार आती है क्योंकि वो हर समय कृष्ण भावनामृत में नहीं होते. तो उस समय उनके ऊपर ये चुनौती होती है इस प्रकार की किस प्रकार वो उस स्थिति में जो है मजबूत बने और इस स्थिति का मुकाबला करें. Okay. All right. What's next? Do we chant the Vedic mantra Sharira Avijjaja now, or is it time for kirtan? Or is it too late? Or a little of both?
Yes, okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Sureshwara, you want to take the books? Rama. Oh, later. Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, sure. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Everybody wants to see you. I'm going to show. Smile. You're on Facebook. You're on Facebook Live. Sorry. Ramo, Ramo, Hare Hare. Jai Prabhupada. Hare Krishna. Namaya Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, bolo. Krishna Krishna,
Paramahamsa Parivrajak Acharya Astatara Sutta Shri Srimad Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajak Acharya Astatara Sutta Shri Srimad Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Anatakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai Islam DVT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Principal Host Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Giri Govardhana Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Mayapur Navati Dham Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Shamaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Go Premanandi Hari Hari Bo